નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એમાં આપણે છેલ્લે રાની નામની કૃતિ નંબર 12 એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. આપણે 2-3 છેલ્લા વિડીયોમાં એ પાઠને વ્યવસ્થિત સમજ્યા અને એ પાઠ આપણે પૂરો કર્યો. હવે આપણે તમામ સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નોત્તર એમાં આપેલા છે એનો અભ્યાસ કરવો છે. તો આપણો જે પાઠ હતો, પાઠ નંબર 12 રાની, એનો જે સાહિત્ય પ્રકાર છે એ ગદ્ય, એટલે કે એ પાઠ છે, કાવ્ય નથી. અને એના લેખક છે એ મહાદેવી વર્મા. એનો જન્મ 1907માં થયો હતો અને મૃત્યુ 1983ની અંદર થયું હતું. આ કૃતિ એ આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં પૂરી કરેલી. હવે આપણે તમને જે સ્વાધ્યાયમાં નાના મોટા પ્રશ્નો પૂછાય છે, જે રીતે પેપર સ્ટાઇલ આપી છે તે પ્રમાણે એનો અભ્યાસ આપણે કરવો છે. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर 5-6 વાક્યોं में लिखिए. એટલે કે આ પ્રશ્ન તમને 4 માર્ક્સમાં પૂછાશે. એક પ્રશ્નના 4 ગુણ રહેશે. હવે આપણે આ પ્રશ્નો વિગતવાર જોઈશું. પહેલો પ્રશ્ન છે, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की क्या इच्छा थी? पिताजी ने उनकी ઈચ્છા कैसे પૂરી की? આપણી જે લેખિકા છે મહાદેવી અને તેના ભાઈ બહેન છે, એની ઈચ્છા શું હતી અને એની ઈચ્છા એના પિતાજીએ કેવી રીતે પૂરી કરી? હવે આપણી લેખિકા મહાદેવી અને તેમના ભાઈ બહેનની જે ઈચ્છા છે એ તમને આખા જે આ કૃતિની શરૂઆતનો જે પેરેગ્રાફ છે એમાં જ તમને મળી જાય છે. બરાબર, કે શરૂઆતમાં જ આવે છે કે એની જે ઘોડી હતી એની પાળવાની એની બહુ ઈચ્છા હતી અને એના પિતાજી છે એને જે સરપ્રાઈઝ આપી હતી તેની આપણે વાત કરવાની છે. महादेवी तथा उनके भाई बहन की घुड़सवारी करने की बहुत इच्छा थी. कुछ दिनों बाद बच्चों ने देखा कि उनके बरामदे में एक छोटा सा टट्टू लाकर बांध दिया गया है. उसकी मालिश तथा खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने के लिए छुट्टर नामक एक साइस भी रख दिया है. સાઈસ એટલે કે તમે જાણો છો, મેં તમને પહેલાં પણ કીધું હતું કે નોકરનો એક પ્રકાર છે. ઘોડાની દેખરેખ કરવા માટે, દેખભાલ કરવા માટે જે વ્યક્તિ, જે નોકર હોય છે, બરાબર, તેને સાઈસ કહેવામાં આવે છે. અને અહીંયા છુટ્ટન નામનો આ સાઈસ છે તે રાખવામાં આવ્યો છે. यह टट्टू एक सुंदर तथा आकर्षक घोड़ी है. बाद में उससे सब ताजरानी या सिर्फ रानी कहने लगे. આ એક પ્રકારની એક આકર્ષક અને સુંદર એવી ઘોડી છે અને પછી તેને તાજરાની અથવા તો પછી તો ધીમે ધીમે બધા તેને માત્ર રાની એવા નામથી એ બોલાવતા હતા. इस प्रकार पिताजी ने घोड़सवारी करने की बच्चों की ઈચ્છા પૂરી की. બરાબર, અને આ રીતે પિતાજીએ એના છોકરાને જે ઘોડેસવારી કરવાની ઈચ્છા હતી, બરાબર, એ પૂર્ણ કરી હતી. पछीनो सवाल छे, महादेवी ने रानी का कैसा शब्द चित्र खींचा है? तो महादेवी ए रानीનું શબ્દ ચિત્ર ખેંચ્યું એટલે કે એનું વર્ણન છે, બરાબર, એના જે શરીરનું વર્ણન છે એને શબ્દોમાં કઈ રીતે કરેલું છે તેનો અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો છે. રાની હલકે ચાકલેટી રંગ કી ઘોડી थी, એટલે કે એના રંગની વાત કરી છે. उसका रंग इतना चमकीला था कि उस पर नज़र फिसल जाती थी. એનો રંગ એવો ચમકીલો હતો કે જેના પર તેની નજર એ ફસી જતી હતી. उसके खड़े कानों के बीच माथे पर अयाल का गुच्छा झूलता था. उसकी आँखें बड़ी काली, साफ और पारदर्शी थी. એની આંખોનું વર્ણન કરેલું છે. उसके नथुनों और जीभ लाल, होठ गुलाबी और दांत उजले थे. એના દાંતનું, જીભનું અને હોઠનું વર્ણન કરેલું છે.
उसके मजबूत दांत लोहे की लगाम चबाते रहते पर भी घायल नहीं होते थे। એટલે કે એના જે મજબૂત દાંત હતા એ જાણો કે એ ચાવતી હોય હંમેશા એવું જ રહેતું હતું। उसकी पीठ ऊंचाई से अधिक थी એટલે કે એની જે પીઠ હતી એ થોડીક વધારે ઊંચી હતી। पैर सुडोल और मजबूत थे, એના પગ હતા એ ખૂબ જ સુડોળ અને મજબૂત હતા। उसकी सघन पूछ मोरछल जैसी लगती थी, એની જે પૂછ હતી એ મોરછલ જેવી લાગતી હતી। उस प्रकार महादेवी जी ने रानी का बड़ा ही आकर्षक चित्र खींचा है। એટલે કે બહુ સરસ વર્ણન એ મહાદેવીજીએ એ અહીંયા કરેલું છે। પછીનો પ્રશ્ન છે કે रानी बच्चों के मनोरंजन का साधन किस प्रकार बनी है। बराबर। હવે જે રાની હતી એ મહાદેવ આપણા જે લેખિકા છે બરાબર એ બધાનું સાધન એ કેવી રીતે બની એટલે કે તેને કઈ રીતે એ રાની છે એટલે કે જે તાજરાની ઘોડી છે એ मनोरंजन करावती હતી। रानी जब आई थी तब कुछ दिन तक बच्चे उससे नाराज़ रहे थे, किंतु धीरे धीरे उसकी वह नाराज़गी दूर हो गई। वे उसकी गर्दन में झूला झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उससे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। धीरे धीरे वे घोड़ी पर सवारी भी करने लगे। घोड़ी भी बच्चों के बहुत स्नेह करने लगी। वह बच्चों को न देखती तो बेचैन होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। इस प्रकार रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए बच्चों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। એટલે કે જે આપણા જે મહાદેવીજી લેખિકા છે અને તેના ભાઈ બહેન એની આખી ટુકડી એની સાથે એટલે કે જે તાજરાની ઘોડી છે રાની નામની ઘોડી છે તેની સાથે બહુ મસ્તી કરતા હતા અને ધીમે ધીમે એની મિત્રતા છે એ ગાઢ બની ગઈ હતી। પછીનો પ્રશ્ન છે रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव क्यों विफल हो गया। तो रानीનું જે પેટ ચીરવાનો જે પ્રયાસ હતો એ શા માટે વિફળ બન્યો। रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। नौकर रामा ने बताया कि अभी एक और बच्चा रानी के पेट में है। बच्चों को लगा कि अगर हम रानी का पेट चीर कर एक बच्चा और निकाल ले तो सवारी में सुविधा रहेगी, रानी महादेवी के पास रहेगी और भाई और बहन दोनों छोटे घोड़ों पर बैठेंगे। यह सोचकर महादेवी का भाई एक दिन दोपहर को चाकू ले आया। चाकू देखकर महादेवी की हिम्मत ने जवाब दे दिया, पेट चीरने के बाद उसे सिलने का उपाय किसी के पास नहीं था, इसलिए रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव विफल हो गया। કે રાણીનું પેટ ચીરી તો નાખીએ પણ પછી પાછું તેને સાંધવા માટે શું કરવું બરાબર એ પ્રશ્ન થયો એટલા માટે રાણીનું પેટ ચીરવાનો પ્રયાસ જે હતો એ વિફળ ગયો। बच्चों को रानी के शिशु पर क्रोध क्यों आया। बच्चे रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वे सवेरे उठे तो देखा कि एक घोड़े का बच्चा भी रानी के पास खड़ा है। बच्चों के पूछने पर नौकर रामा ने बताया कि वह बच्चा रानी के पेट में था। रानी जो दाना पाना खाती थी उसे यह बच्चा खा जाता था और उसके पेट में सोता रहता था। यह जानकर बच्चों को बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि यह बच्चा तो किसी काम का नहीं है। यह कितनी बुरी बात है कि वह रानी के पेट में रहकर सारा दाना चारा खा जाता है। व्यापारी रानी कितना काम करती है उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर घुमाती है और यह बच्चा मुफ्त में उसका खाया हुआ खाना हजम कर जाता है। यह सोचकर बच्चों ने रानी के शिशु पर बड़ा क्रोध आया। એટલે કે રાણીના પેટમાં જે બાળક હતું બરાબર એ બેઠો બેઠો એમને ખાય છે એ રીતે એને તેમાં હતું। પછીનો
प्रश्न आपेलो छे छठो, रानी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रानी की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर, रानी एक छोटी सुंदर घोड़ी है। उसका स्वभाव भी सरल और स्नेहपूर्ण था। परिवार के बच्चे उसके साथ दिल खोलकर खेलते थे। पालतू नेवला भी उसकी पूंछ से झूलता था। कुतिया એટલે કે रोजी भी उसकी पीठ पर चढ़ती उतरती थी। कभी कोई बच्चा मार देता तो उसका स्वाभिमान जाग जाता था, फिर भी वह शांत रहती थी। कोई बच्चा उसकी पीठ पर से गिर जाता तो उसे बड़ा पश्चाताप होता था। उसकी सूझबूझ से सोने के खोए हुए कड़े मिले गए थे। अपने उन्हीं गुणों के कारण रानी ने पूरा परिवार का दिल जीत लिया था। बराबर, એટલે કે જે રાનીનું એના સ્વભાવનું એ સમગ્ર વર્ણન એ અહીંયા કરવામાં આવેલું છે। પછીનો પ્રશ્ન આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। એટલે કે એક પ્રશ્નના તમને અહીંયા 2 માર્ક્સ અહીંયા છે। गधे पर बैठे अंग्रेज बच्चों के बारे में रामा ने क्या कहा? तो गधे पर बैठे अंग्रेज बच्चों के बारे में रामा ने बताया कि उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड मिला है, परंतु विलायत में गधे नहीं है, इसीलिए उन्हें भारत भेजा गया है। रानी के प्रति बच्चों का ईर्ष्या और रोष दया भाव में क्यों बदल गया? बच्चों ने सोचा कि ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी उसे वहाँ से निकाल दिया गया। यह कल्पना करते ही उनकी सारी ईर्ष्या और रोष दया भाव में बदल गया। रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी दूर होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उससे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे અને આ રીતે એની મિત્રતા હતી એ વધી। रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटी और क्यों? एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी। उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। उससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। पछी रानी के बच्चे को देखकर बच्चों को क्रोध क्यों आया? रानी के बच्चों को देखकर बच्चों ने सोचा कि वह बिना कुछ कामकाज किए रानी के पेट में सो रहा था। वह कुछ भी कामकाज किए बिना दाना चाना खाता रहता था। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। એટલે કે એક એક માર્ક્સના સવાલ છે। सफ़ेद टट्टू के बारे में रामा ने बच्चों से क्या बताया? सफ़ेद टट्टू के बारे में रामा ने बच्चों से बताया कि सफ़ेद गधे हैं जिन पर अपराधिया को बिठाने की सज़ा दी जाती है। लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं? महादेवी ने रानी के अलावा रोजी એટલે કે कुतिया और निकी એટલે કે नेवला के चरित्र लिए हैं। रानी अपनी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को कैसे संतुष्ट करती थी? रानी अपनी नंगी पीठ पर अयाल पर बैठने वाले बच्चों के दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी है? लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि अंग्रेज बच्चे के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा अपने पास नहीं होना वह अन्याय की बात है। रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? रानी रेखाचित्र साहित्यिक विद्या है। महादेवी रानी पर कब बैठती थी? महादेवी रानी पर तीसरे पहर यानी संध्या समय बैठती थी। जन्मदिन पर नानी ने क्या भेजा? जन्मदिन पर नानी ने शेर मुँह वाले सोने के कड़े भेजे। रानी बच्चों को अपने पास कैसे बुलाती थी? रानी पैर पकड़कर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। તમારે હોમવર્કમાં એ અહીંયાથી એટલે કે પ્રશ્ન 2 એટલે કે એના જે આ સ્લાઇડના 2 પ્રશ્નો લખવાના છે, આ સ્લાઇડના પણ 2 પ્રશ્નો અને આ પ્રશ્નો અને આ પ્રશ્નો। આમ આ પહેલી સ્લાઇડ, આ બીજી સ્લાઇડ, આ ત્રીજી સ્લાઇડ અને આ ચોથી સ્લાઇડ, આમ 4 અલગ સ્લાઇડના પ્રશ્નો એ તમારે એક વખત હોમવર્કમાં લખીને મોકલાવાના છે। તો આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આની પછીની જે કૃતિ હશે પાઠ કે કાવ્ય એની આપણે ચર્ચા
કરીશું।